आज हम क्या करेंगे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. So what is this endocrine system? It is also a part of this lesson, coordination. Okay, so what is that we are going to study in this endocrine system? We are going to study about different endocrine glands which are located at different locations in our body. अब ये टॉपिक जो हमारे लेसन कोऑर्डिनेशन का ही दूसरा आधा हिस्सा है, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, हमारे जिस्म में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है. और ये हार्मोन्स क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं. सो इट इज सेड हियर वी हैव इन आवर बॉडी different endocrine glands located at different locations in our body. And what these all endocrine glands are going to do? They are going to produce hormones. And what are hormones? Hormones are the chemical substances. Then, okay, let us discuss few lines about this endocrine system there. So write this as first point there. Okay, write it as this first point. We have many endocrine glands. We have many endocrine glands. We have many endocrine glands in our body, located at different locations, of our body. Then the next thing we are going to write here is all the endocrine glands are going to release different hormones there. Then the next thing is here all these hormones, they will be going and acting on what? Target organs. Different hormones will target the different organs. तो उसके बाद ये बोला गया कि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर निशाना करता है, उसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि here we are going to discuss there are different hormones released by different endocrine glands, and all these endocrine glands released hormones are going to target the different organs there. So they are called as what organs? Target organs. The hormones released will target the different organs in our body. Then what type of glands are our endocrine glands? It is said endocrine glands are ductless glands. जितनी भी endocrine glands होती है क्योंकि वो डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाई जाती है. और ये डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ये जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं वो जाकर डायरेक्ट खून में तहलील हो जाता है, वो कोई ट्यूब्स में नहीं बहता है. जैसा कि खून रगों में बहता, वैसा ये हार्मोन जो है सो कोई ट्यूब्स में नहीं बहता है, वो डायरेक्ट जाके खून में घुल जाता है. इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके, सो वी राइट हियर द हार्मोन्स प्रोड्यूस
the hormones produced by endocrine glands will directly get dissolved in blood, but will not flow in any tubes. So the endocrine glands are called ductless glands. Okay, so this is all about few lines about our endocrine glands. Okay, so we will be going to see now the different type of endocrine glands and what hormones they produce and what functions they are going to perform. ये था मुख्तसरन इंफॉर्मेशन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तफसील से. Can you have this? Okay. The next thing we will be going to see here one by one what are the different endocrine glands. अब हम देखेंगे एक के बाद एक पूरे endocrine glands के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे. So the first endocrine gland is our pituitary gland. Pituitary gland. जो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड. और जैसे कि ये हमको सबको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड मानी जाती है. क्यों हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड मानते हैं? क्योंकि ये ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड बोल रहे हैं? मास्टर ग्लैंड. So it is said here that pituitary gland is called as the master gland. So why we are calling it as master gland? Because it controls all the other endocrine glands in our body. So we write it as this first point. The pituitary gland is called a master gland because it controls all the okay. Next thing we are going to see is here that our pituitary gland is divided into 3 lobes there. उसके बाद जो हमको दूसरी चीज ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मालूम कर लेनी ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 टुकड़ों में बटी हुई है. वो एक एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? लोब बोलेंगे. So pituitary gland is divided into how many lobes? 3 lobes there. Posterior lobe, middle lobe and anterior lobe. वो 3 टुकड़ों के नाम क्या है? एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब. तो हम देखेंगे कि ये एक एक लोब क्या हार्मोन्स को रिलीज करती है. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी नाउ दैट द ईच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज डिफरेंट हार्मोन्स देयर. ओके, सो वी राइट इट हियर. द पिट्यूटरी ग्लैंड
The pituitary gland is divided into three lobes there. What are they? They are anterior lobe, middle lobe, पोस्टीरियर लोब। ये हो गए तीन टुकड़े हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब हम देखेंगे कि एक एक टुकड़ा क्या हार्मोन्स को रिलीज करता है, मगर उससे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यही नहीं, जब कभी भी हम कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसका लोकेशन लिखना जरूरी है कि ये हमारे जिस्म में कहां पर मौजूद है। So whenever you are studying about any pituitary gland, it is compulsory that we need to know where is this particular pituitary gland located in our body. So where is our pituitary gland located? Just below the brain. Where in below the brain? Attached to the hypothalamus region. So we write it here, the side heading we write it here, location of pituitary gland. So where is this pituitary gland located? Okay, below the brain there, below the brain. Okay, it is present below the brain and performing many important functions there. Okay, so we will see here first what are the hormones released by our anterior lobe there. Anterior lobe. Okay, so here what are the hormones produced by our anterior lobe there. So first, if you see, coming to the anterior lobe, so anterior lobe is going to produce the growth hormone, which is also called as what? Somatotrophin hormone. तो ये बोला गया कि ये जो एंटीरियर लोब है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसको हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मैं दो नाम इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बाज वक्त तो एग्जाम में क्या कर रहा, ग्रोथ हार्मोन नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन तो दे दिया तो आसानी से पहचान लेते बच्चे। तो क्या जरा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब तो याद रहता, एग्जाम के टाइम की बात बोल रहा हूँ। तो एंटीरियर लोब इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर लोब इज रिलीजिंग द हार्मोन। First hormone, what is the name of that hormone? Somatotrophin hormone, which is also otherwise called as growth hormone. So whenever we say growth hormone, means immediately we can understand what it is going to do there. Okay, and as in the earlier topic I have said you, for every hormone there will be one target organ there. So what will be the target organ for this somatotrophin hormone? Okay, suppose if we are growing in our height, then what is growing so that we grow in our height there? Okay, bones there. Suppose if muscles grow, we grow in sidewards there. But if bones grow, we grow in height there. It means that this somatotrophin hormone is going to target the bones and increasing the length of bones there, so that we grow in height. Okay, so we write it here there. So anterior lobe, it releases a hormone called somatotrophin hormone, or which is otherwise called as growth hormone. Which is also called as what? Growth hormone. Okay. Now as I have said you, for every hormone there is a target organ. So we are going to see now, what is the target organ
for our growth hormone there? Bones. Okay, bones are the target organ. Bones are targeted. Okay, target by somatotrophin hormone. Okay, so when bones are targeted, what we said there, what it is going to do? It is going to increase the length of bones there. Now coming to the function of this somatotrophin hormone, what function it is going to do there? Okay, it increases, okay, it target the bones, and increases the length of bones there, length of bones, so that the child grow in height there. Okay, that तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो हमारा एंटीरियर लोब है, ये एक हार्मोन को रिलीज कर रहा है जिसका नाम है सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। और जब कभी भी हम कोई भी हार्मोन का नाम लिखते हैं तो फौरी हमको ये बताना जरूरी पड़ जाता है कि वो हार्मोन कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है। तो ये बताया गया कि ये जो हमारा सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन है वो हमारे बोन्स को टारगेट करता है, और उसका काम क्या होता है, उसे क्या काम अंजाम देता है, उन्हें बोन्स को टारगेट करके बोन्स के लेंथ को इंक्रीज करता है, जिससे बच्चे का कद बढ़ता है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि बाज बच्चों में, सबके अंदर ये चीज नहीं होती मुमकिन, बाज बच्चों में कुछ ऐसी चीज खाने में आ जाती है जिसकी वजह से ये सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन कुछ हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता, वो बच्चा उनकी उम्र से भी कुछ ज्यादा ग्रो हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगैंटिज्म। ओके, बट इट इज, वो जरूरी नहीं है कि कुछ खाने में कुछ चीज ऐसी आ जाने की वजह से ही वो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि कद का रास्त ताल्लुक जेनेटिक से होता है, जीन से होता है। ओके, अब ये खाने की चीज तो दूसरी चीज है, मगर मेन ताल्लुक कद के बढ़ने का जीन से है। ओके, मगर बाज बच्चों में ये देखा गया कि ग्रोथ हार्मोन अगर हद से ज्यादा रिलीज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के जरिए, तो उनके अंदर कुछ ज्यादा ही कद बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है जाइगैंटिज्म। सो इन सम चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस, ओके, दैट द एंटीरियर लोब विल प्रोड्यूस सम more quantity of this somatotrophin hormone. So in this condition what is going to happen, the height of the child will increase little bit more there. Okay, so according to the age, according and comparing to the age of other children, okay, he will be little bit more in height there. So that condition is called as what, gigantism. So we write that also. And at the same time there is one more condition, but in some children this is also noticed there, that this anterior lobe produces the somatotrophin hormone in less quantity. Suppose if somatotrophin hormone is produced in less quantity, then automatically the child will remain dwarf. Dwarf means what? Okay, in little height there. Okay, in short heighted there. So that condition is called as what? Dwarfism. कुछ बच्चों के अंदर ये सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन कुछ कम प्रोड्यूस होता, कुछ कम रिलीज होता, तो उसमें वो बच्चे का कद कम रह जाता है। तो ऐसी हालत को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो मान वी राइट बोथ द कंडीशन, ये दो भी हालत हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इफ ग्रोथ हार्मोन or
somatotrophin hormone is produced in less quantity. The child remain dwarf. This condition is called dwarfism. Then another condition is if somatotrophin hormone is produced in more quantity, the child become very tall, and this condition is called gigantism. Okay, both the conditions we are mentioning here. Okay, so this is all about our first hormone, okay, which is released by the anterior lobe of our pituitary gland. ये हमारी एंटीरियर लोब के जरिए प्रोड्यूस होने वाला पहला हार्मोन है. उसके बाद एंटीरियर लोब के ही जरिए प्रोड्यूस होने वाला दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन है भाई? प्रोलैक्टिन हार्मोन. ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जब माँ बच्चे को जन्म देने के लिए रहती है तो वो टाइम पे ये हार्मोन दूध प्रोड्यूस करवाता है माँ के ब्रेस्ट के अंदर. तो व्हाट इज दिस prolactin hormone going to do there? So this prolactin hormone is going to target the mammary glands in the breast of mother, and it is making the milk to get produced in mammary glands there. But when it will be going to happen there? When mother is about to give birth to the child there. So here what is that another hormone which our anterior lobe is producing? Prolactin hormone. ये जो दूसरा हार्मोन है ये भी हमारे एंटीरियर लोब के जरिए ही प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन. तो यहाँ पे हम इसका दूसरा हार्मोन जो हमारे एंटीरियर लोब के जरिए ही प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. So whenever we write the name of any hormone, what is the first thing we need to write there? Target organ. So we need to write there, this prolactin hormone is going to target which organ there. So it is said here that this prolactin hormone is going to target what there? Mammary glands there. What it is going to target? Mammary glands. And where will be this mammary glands present? In the breast region. Mammary glands in the breast of mother. In the breast of mother. So here this is that. ये भी एंटीरियर लोब ही प्रोड्यूस कर रहा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन. कैन आई राइट अबाउट हियर? Now
coming to the functions produced by our functions performed by our प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद हम जानेंगे कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम अंजाम दे रहा है। So what functions this prolactin hormone is going to do there? So here it is said the prolactin hormone by targeting the mammary glands, what it is making in mammary glands to produce milk there. So here it is said it target the mammary glands. It target the mammary glands and make them and make the milk to produce in it there. Produce in it. So here these two hormones which are released by which लोब देर एंटीरियर लोब। ये दो हार्मोन है, एक है उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दो हार्मोन्स हमारे एंटीरियर लोब के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा लोब। वो दूसरे लोब का नाम है यहाँ पर द पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब। So we will be going to see now what are the hormones produced by our posterior lobe. So always remember here the posterior lobe is going to release two hormones here. In that one is here oxytocin hormone. So we write here the hormones released by the hormones released by posterior lobe are first one oxytocin hormone. Oxytocin hormone. Now whenever we write any hormone, we first write what the target organ. Which organ ma? Target organ. So all of you stop writing and see towards the body here. That this oxytocin hormone is going to target the mammary glands. What they have produced and kept in them? Milk. They have produced the milk under the influence of prolactin hormone. Now oxytocin hormone is going to target this mammary glands and making the milk to release out or milk to produce out of the breast there when the child sucks there. So this is the function of our oxytocin hormone. तो यहाँ पे हमारे posterior lobe के जरिए प्रोड्यूस होने वाला जो पहला हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाके ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ब्रेस्ट के अंदर उसको जाके टारगेट करता है, निशाना बनाता है और उसके अंदर बने हुए दूध को खतरा बाहर निकालता है। जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट से जब दूध को चूसता है तो वो खतरा दूध वो बच्चे के माँ के ब्रेस्ट से बच्चे के मुंह में खतरा दूध आता है। तो ये काम कौन करवा रहे? ये करा रहे हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो देयर आर so many other organs which are even targeted by this oxytocin hormone. तो उसके अलावा भी हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरे ऑर्गन्स को भी टारगेट करता है। जैसे कि ये टारगेट करता है यूट्रस बैग को। यूट्रस बैग क्या है? जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बच्चेदानी। तो उसको टारगेट करके उन्हें क्या कर रहा है? जैसे ही माँ का जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का जब कंप्लीट हो जाता है तो माँ के अंदर वुमन के अंदर एक क्या बोलते हैं लेबर पेन्स को पैदा करता है। कौन लेबर पेन्स को पैदा कर रहा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो लेबर पेन्स को प्रोड्यूस करने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी
होती है। तो उससे ये बोला गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस बैग को भी टारगेट कर रहा है और नॉर्मल डिलीवरी में मदद कर रहा है। और बाज़ वक्त ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये भी पूछा जाता कि वो कौन सा हार्मोन है जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता, ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये भी पूछा जा सकता कि वो कौन सा हार्मोन है, ओके, जो लेबर पेन्स को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, ओके, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो और दूध को बहा के बाहर निकालने वाला भी कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो वी राइट हियर दैट दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन is going to perform, okay, very important two functions. First function is it is going to target the mammary glands and making the milk to flow out there. And the second function, what I said, that this same hormone is even going to target what, uterus bag, okay, and it is going to help in causing of normal delivery, okay, and before that it causes labor pains in women there in the last days of gestation period there. So that too also we will write it here. So here we write the two target organs. One is the mammary glands. It is going to target the mammary glands and the uterus bag. Now coming to the functions. It target the mammary glands. It target the mammary glands and make the milk to release out when child sucks. Then what more function it do? It target uterus bag. It target uterus bag and help to cause labor pains and helps to cause labor pains for normal delivery. For normal delivery. For normal delivery. Okay? एक बात बोलिए सर, अगर एक दिन हॉलीडे दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं? No. क्यों नहीं दिया हॉलीडे? Because they are having the board exam very soon and they are going to write their cycle test also. आप मेरी हालत देखो, मैं काम वाला नहीं दिख रहा हूँ। Yes. मैं मेरी हालत को देख रहा हूँ जरा भी नहीं. But they are not realizing, sir. They are not realizing. इन लोगों के अंदर कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, क्या कर रहे क्या। बोला मैं अवध के साथ मिलके नहीं बात करना, वो आ जाके उनके बंदों बैठे, उन दोनों मिलके उन दोनों के साथ बात कर लेते, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। They are not realizing, sir. Children are not realizing. I am telling सो रहे you. और देखो आप दिखता मैं। I am finding. I am observing. आज सुबह कितने बजे उठ गया मैं? The children are not at all realizing the efforts of the I am teachers. watching him with the camera. This Yes. I have installed this to see who is talking. Yes. And You know that four not. fellows are engaged. This fellow is also included. Yes. I am observing continuously from here and here something sounds are talking is listen Get there. up and come here. You also get up and come here. Go there, buddy, go there. Friends together should not sit. If you sit beside an enemy, it will be good for you to study and even for him to study.
अगर आप अपने दुश्मन के बाजू बैठते हैं तो वो बहुत मुनासिब है, उन्हें भी पढ़ता आप भी पढ़ते। दोस्त के पास बैठेंगे तो आप भी नहीं पढ़ते उन्हें भी नहीं पढ़ते, दोनों भी नहीं पढ़ते। ओके, सो देन we are going to see the second hormone which is released by our posterior gland। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे posterior gland के जरिए posterior lobe के जरिए प्रोड्यूस होने वाला दूसरा हार्मोन। Can I rub this one? Okay. The next hormone released by our posterior lobe is here vasopressin hormone. Vasopressin hormone. So here, whenever we write, as usual, whenever we write the name of any hormone, we need to write first the target organ there. So means this hormone is going to target which organs of our body there. So it was noticed that this vasopressin hormone is going to target the renal tubular region of nephron, and it is going to control the excretion of urine from our body. Means per day how much quantity of urine has to be excreted out. Okay, it is how much urine to be excreted out? Okay, 1.6 to 1.8 liters per day. तो ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये अपने नेफ्रॉन के रीनल ट्यूबुलर रीजन वाले हिस्से को टारगेट करता है और हमारे जिस्म से एक दिन में कितना पेशाब खारिज होना है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन इज गोइंग टू टारगेट द रीनल ट्यूबुलर रीजन ऑफ नेफ्रॉन and control the quantity of urine to be excreted out per day। तो कितना पेशाब हम सारा दिन में एक्सक्रीट करने वाले हैं? 1.3 to 1.8 लीटर्स। ओके, तो ये है हमारा कुल पेशाब जो हम सारा दिन में एक्सक्रीट करते हैं। बाज वक्त ये हो जाता है कि अगर ये वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर कम रिलीज हो गया या बाज वक्त ऐसी भी कैफियत आ जाती है कि हम 1 से 3-4 लोगों के पास जब मेहमान चले जाते हैं तो हमको कोई किसी ने शरबत पिला दिया, किसी ने कूल ड्रिंक पिला दिया, किसी ने और कोई शरबत पिला दिया, तो ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये जब बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो इसकी जो कारकर्दगी है कि हमारे जिस्म से कितना पेशाब खारिज होना है वो नहीं कर पाता है सही ढंग से। तो वो टाइम पे वो इंसान को हद से ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत को या ऐसे कंडीशन को हम डायबिटिस इंसिपिडस कहते हैं। So it is said here that this vasopressin hormone sometimes it is going to produce in less quantity, or sometimes what happens is that suppose if we went to our relative's house, suppose if some offered them water, some offered them some cool drink, or some offered them some sharbat. Suppose if we drink liquids in excess quantity, then this vasopressin hormone will get diluted there. Then it may not be in a position to control the excretion of urine per day. So we know that we have to excrete 1.3 to 1.6 to 1.8 liters of urine per day. So that we cannot excrete out there. We may be going to excrete in excess quantity. Means the person is going to frequently urinate there, or frequently the person is going for micturition. So that condition is called as what? Diabetes insipidus. So write it now. Target organ.
Okay, so these are the two hormones released by our posterior lobe of pituitary gland. Now the last lobe of pituitary gland is left, that is our middle lobe there. So can I rub this side one? उसके बाद हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो आखिरी लोब है वो मिडिल लोब, जो बीच वाली लोब है, ओके, बीच का जो टुकड़ा है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके व्हाट आर द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय आवर ओके मिडिल लोब देयर, मिडिल लोब. ओके, so it is found there the middle lobe of pituitary gland is going to release only one hormone there. So what is that one hormone? Okay, it is called as melanocyte stimulating hormone. ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की बीच वाली लोब है, ओके, ये लोब एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. और वो हार्मोन किसको टारगेट करती है और उससे क्या होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो लिखिए यहाँ पे, द हार्मोन रिलीज्ड, the hormone released by the hormone released by middle lobe is
melanocyte stimulating हार्मोन। उसके बाद ये जो दूसरा हार्मोन, जो पहला हार्मोन हमारी ये मिडिल लोब प्रोड्यूस कर रही है, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसा कि हम हमेशा जैसे ही हार्मोन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम वहां पे टारगेट ऑर्गन को लिखते हैं। तो ये जो हमारी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे स्किन को टारगेट करती है। और स्किन में किसको टारगेट कर रही है? अपने स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट। तो ये मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करके उसको ज्यादा, हद से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से अपने स्किन का कलर ब्लैक कलर में चेंज होते जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये हार्मोन, ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हाइपर एक्टिव, बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है जब अपने जिस्म, बोले तो अपनी स्किन जब धूप से डायरेक्ट एक्सपोजर होती है। तो जब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करके उसको हद से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से अपना जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्लैक कलर में चेंज होता है। तो व्हाट इट इज सेड देयर that this melanocyte stimulating hormone, it is going to target the melanin pigment present in our skin there. So due to that, what happens? The more quantity of melanin pigment is produced, and that makes the skin get dark black complexion there. And one thing it was noticed that this hormone is making the melanin pigment to produce more when it comes in contact with the sunlight. Okay, so we write this here. It target the melanin pigment in skin. And what is it going to do there? Coming to its function. Okay. Coming to its function, it is said it makes the melanin pigment to produce in excess quantity melanin pigment to produce in excess quantity so that excess quantity when exposed to sunlight and makes the skin appear dark black. Okay, so this is all about our master gland, pituitary gland and its lobes and what hormones they are going to release. These are there. Okay, ये था हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स और उनके जरिए प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स और वो क्या क्या काम अंजाम देते हैं। ओके, अब उसके बाद हम दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कैन यू रब दिस? ओके, द नेक्स्ट Okay, the next thing we are going to discuss is
here about our other endocrine gland, that is called as thyroid gland. Which gland ma? Thyroid gland. Okay. So as we know that whenever we write any endocrine gland, what is that? First we are going to write there the target organ. So here also we are going to write the, okay, we are going to write the location. Okay, so where is the location of this thyroid gland? There in the neck region, here. So we write here where it is located, okay, at neck region, at neck region. Okay, then coming to the target organ, okay, target organ, okay, there are many target organs for this thyroid gland, okay, because the hormone which it releases is going to target or going to control many activities happening there. So first thing it is said, so on behalf of writing all that, I'll write it here one word, okay, it target the metabolic activities happening there, metabolic activities. So we know very well what comes under these metabolic activities. Metabolism is a term which is going to perform two actions there, anabolism and catabolism. Anabolism का मतलब होता है बनाना और catabolism का मतलब होता है break करना. So here metabolic activities of a person are getting badly affected due to the thyroid glands hormone thyroxine there. तो ये जो metabolic activities है ये बुरी तरीके से मुतासिर हो जाते हैं ये थायराइड ग्लैंड के जरिए प्रोड्यूस होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा प्रोड्यूस होने से और कम प्रोड्यूस होने से, दोनों में भी नुकसान आते हैं. ना ज्यादा प्रोड्यूस होना है थायरॉक्सिन हार्मोन को, ना कम प्रोड्यूस होना है. जितनी मकदार में प्रोड्यूस होना है उतना ही होना है. सो इट इज सेड हियर द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, okay, it is going to badly affect the metabolic activities occurring in an organism. So it is found that the thyroxine hormone has to be produced always in required quantity only, neither in less quantity, neither in more quantity. If it is produced in more quantity also, it is going to affect some metabolic activities. And if it is going to produce in more quantity also, it is going to affect some activities there. So we will see here now what is that happening there. Okay, so first we write here the hormone produced by this, okay, hormone produced by thyroid gland. Okay, so what are the hormones produced by thyroid gland here? Okay, it is going to produce the hormone thyroxine hormone. And before we start the functions of this thyroxine hormone, let us know this little information also. So what was that found in research, that this hormone thyroxine, if it has to produce in required quantity by our thyroid gland, then what should be there in our blood? Iodine should be there. So this was found in research. So after they found this in research, what our government decided, that the government wanted to do a research and find out which is that thing, okay, which has to be present in the person, okay, in the kitchen of every person there, poor person and as well as the rich person. So after a research, it was found that salt is the substance which is found in everyone's kitchen room there, either the poor and even the rich there. So after that, what was that they did? They called upon the people of, okay, salt producing company people, and they gave an instruction that every salt producing industry has to compulsorily add iodine to salt there. So when they put the big puddles of salt for grinding to powder, they were adding iodine to it. Iodine is also white powder and salt is also white powder. When it grind, it get mixed with the salt, and now in the market they are selling as iodized salt. There are many companies selling the salt with different names, but
people are brought awareness by through media, television, through newspapers, okay, then famous personalities of film industry, sports, okay, sports, they are coming and saying that take always the iodized salt to avoid the thyroid problem, because thyroid problem on the whole all over the world, okay, 80% of the females are found affected with thyroid problem. Very rarely it is affecting the males there. Only 1 to 10% are there. But 80% of the females all over the world, they said that they are found affected with thyroid problem. Either hypothyroid and hyperthyroid. 90% of them are suffering with hypothyroid. We are going to see now what are the symptoms shown by them in hypothyroidism and what are the symptoms shown by them in hyperthyroidism. So that line also we will add it here. Then we write it here. To produce sufficient quantity of thyroxine hormone, we must have sufficient quantity of iodine in our blood there. Sufficient quantity of what there? Iodine in our blood. Okay. Then one more very important information I would like to share with you. That is, here actually the salt which we are eating, that is sea salt there. Okay. Though it is iodine added and called as iodized salt, but it is said that this iodized salt is produced by Allah Ta'ala for the sea animals there, not for human beings. But we human beings, foolishly, we are eating the sea salt. But actually that is for the sea animal. Then for human beings, which salt Allah Ta'ala has produced? Pink salt, which is called as a rock salt also. So this rock salt if we take, then we never suffer with any thyroid problem. So nowadays the people are brought awareness and the rock salt is sold in the supermarkets and even in the small shops, and people are buying and started using this rock salt or pink salt there. It is good. Okay, if we start using it, then we never suffer with the thyroid problem there. Then we see now, okay, depending upon the less and more production of thyroxine hormone, there are two type of thyroid problems noticed there. तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे जिस्म में जितनी मकदार में प्रोड्यूस होना है उतना अगर होना बोले तो हमारे खून में क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए. ओके, उसके बाद ये देखा गया कि ये जो नमक है जो हम खा रहे हैं, ये दरअसल अल्लाह ताला ने समंदरी मखलूक के लिए बनाया. अपने लिए अल्लाह ताला ने रॉक साल्ट या जिसको हम पिंक साल्ट बोलते हैं वो बनाए हैं. अगर हम रॉक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली ग़िज़ाओं के जरिए, हाँ, तो हमको कभी भी ये थायराइड प्रॉब्लम नहीं आता. ओके, और यहाँ पे ये थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन की मकदार के हिसाब से दो किस्म के थायराइड प्रॉब्लम पाए गए. डिपेंडिंग अपॉन the production of thyroxine hormone, okay, there are how many types of thyroid problems noticed there? There are two types of thyroid problems noticed: hypothyroidism and hyperthyroidism. And I said you 80% of the women are suffering with hypothyroidism. पूरी दुनिया में 80% जो औरतें जो थायराइड प्रॉब्लम से मुतासिर है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं. ओके, तो हम देखेंगे कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म में किस किस्म की अलामतें बाहर जाहिर होती है. सो वी विल बी गोइंग टू सी नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स शोन बाय द हाइपोथायरॉयडिज्म अफेक्टेड पीपल देयर. ओके,
So write it here, depending upon the production of thyroxine hormone, there are two types of thyroid problems. There are two types of thyroid problems. What are they? They are hypothyroidism and the second one is hyperthyroidism. Hypothyroidism and hyperthyroidism. Okay? So clear up this side? The first one will start with our hypothyroidism. So what is that going to happen in hypothyroidism? So it is noticed there that hypothyroidism is caused due to less secretion of thyroxine hormone there. ये hypothyroidism का problem उनको होता है जिनके जिस्म में थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है. Okay, so we write here this line. Okay, it is caused due to less production of thyroxine hormone. Then what symptoms the people are going to show in hypothyroidism there? So symptoms of hypothyroidism, किस किस्म की अलामतें जाहिर होती है बाहर हाइपोथायराइडिज्म में, वो अब हम पढ़ेंगे. सो पहली चीज यहाँ पे ये बताई गई कि हाइपोथायराइडिज्म में इंसान का जिस्म फूल जाता है. So they will be going to get more fatty. Why they will become more fatty? Due to accumulation of water. उनके जिस्म में पानी भर जाता है जिसकी वजह से उनका जिस्म हद से ज्यादा मोटे हो जाते हैं. हाइपोथायराइडिज्म में क्या नजर आता? बहुत मोटे हो जाते हैं, मोटापा नजर आता है. Hypothyroidism is going to bring over bulkiness there. And why that bulkiness will come? Due to accumulation of water. So यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला सिम्टम क्या होगा? The body become swollen due to accumulation of water. And what happens in them? Fatigueness and weakness. Fatigueness means कमजोरी. कमजोरी और यहाँ पे sluggishness, laziness. कमजोरी और उनके अंदर आलसीपन बहुत ज्यादा नजर आता है. बहुत जल्दी थक जाते. फैटिगनेस में थकावट हो जाना, कमजोरी नजर आना, ये भी दूसरी अलामत है हाइपोथायराइडिज्म वाले के अंदर. सो दोज पीपल हु आर सफरिंग विद हाइपोथायराइडिज्म, they will get tired very quickly and they will be showing weakness there. So we write it here. They become tired
tired and weak there. Okay, they will very soon they become tired and weak there. They will be very weak there. And the next thing they show is, here they will show myxoedema. As here we said there, the water is going to get accumulate in their body na. Due to that it is said all their body parts become swollen there है ना. पूरे जिस्म के parts, चेहरा रहने दो, चाहे उन्हें खाना खाओ ना को खिलाओ, उनको खाने से कोई ताल्लुक न रहता मोटापे से. अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म वाला ये समझ रहा कि मैं क्या बोलते डाइटिंग करके दुबला हो जाता हूँ, तो नहीं, दुबला तो नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो मोटापा है वो खाने से नहीं आया. अगर उनको अब 8 दिन खाना भी नहीं दिए तो वैसे ही मोटे रहते लोग, बोला 1 इंच भी कम नहीं होते. अगर उन लोग साल भर जिंदगी भर भी अगर डाइटिंग करते कि दुबले होते बोल के, तो 1% भी दुबले नहीं होते. जैसी बॉडी है वैसी रहती है उनकी बॉडी, क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया, क्या जमा हो गया, मैक्सोएडिमा से पूरा पानी जमा होकर सूजन आ गए. ओके, दे शो ओके their body shows मैक्सोएडिमा. उसके बाद जो चौथी चीज है ये हाइपोथायराइडिज्म वाले जो दिखाते हैं वो ये है कि उनके अंदर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, पहली ये बहुत ही खतरनाक अलामत है हाइपोथायराइडिज्म वालों के अंदर. फीमेल्स के अंदर जो हर महीना जो साइक्लिकल चेंज होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको हम बायोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हम 8वीं जमात में भी पढ़े और 10वीं जमात में भी पढ़े, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर इफेक्ट हो जाती है. रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं. जो हर महीना 28 या 30 की जो साइकिल रहती है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो सही ढंग से नहीं होती है. डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, 1 महीना लेट या 15 20 दिन लेट, तो इस तरीके का डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल विल गेट वेरी बैडली अफेक्टेड देयर. Okay, so we write here, okay, irregular menstrual cycle myxoedema. Okay, then coming to the last symptom of hypothyroidism is, okay, उसके बाद जो आखिरी अलामत है हाइपोथायराइडिज्म की, उनके अंदर सिंपल गॉइटर हो जाता है. ये सिंपल गॉइटर में क्या होता है, वो थायराइड ग्लैंड जो उनके हलक के रीजन में होती है, वो थायराइड ग्लैंड ही स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है, और उनको यहाँ पे एक इस तरीके का सूजन एक गड्ढे का जैसा आ जाता है उनको, ये गर्दन के निचले से. इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल गॉइटर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लोअर रीजन ऑफ देयर नेक, a swelling will come, okay, that is called as simple goiter. And what happens in simple goiter? The thyroid gland is going to get swelled up there. Okay, so we write it here, this last symptom. Simple goiter is caused means the thyroid gland get swollen. Okay, so these are all about our hypothyroidism. Next we will be going to see about our hyperthyroidism. इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है दोनों में. ओके, 1-2 ही अलामतें हैं जो थोड़ा सा हटके है हाइपोथायराइडिज्म से. ओके, मगर इसके अंदर भी हम पढ़ लेंगे तफसील से. कि द नेक्स्ट थिंग हियर इज अबाउट आवर हाइपरथायरॉइडिज्म. So in hyperthyroidism, what happens is the people who are suffering with hyperthyroidism, it was noticed in them the thyroxine hormone is produced in excess quantity. इनके अंदर क्या देखा जाता हाइपरथायरॉइडिज्म वालों के अंदर कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाता है.
जिसकी वजह से इनके अंदर जो पहली अलामत नजर आती है कि वो हद से ज्यादा दुबले हो जाते हैं, इतने दुबले कि हड्डी पे चमड़ा, बस उतने ज्यादा दुबले हो जाते हैं। ओके, दे विल बी शोइंग एन एक्सेस वेट लॉस। इनको कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हड्डी पे चमड़ा हो जाता है। अगर ओके उन लोग मोटा भी होना चाहे, उनको कुंडा भर भी खिलाए तो भी उन लोग मोटे नहीं होते, वो हड्डी पे चमड़ा, ओके हड्डी कूड़ा बोलते नहीं, वो हालत रहती। So it is said here that first we write here what is that going to happen, this hyperthyroidism, it is caused due to excess production of thyroxine hormone. Thyroxine hormone. Then afterwards we write here what are the symptoms of this hyperthyroidism. As I have said you, a very little difference in symptoms we notice here. First thing is what I said, the person or the patient or person become very thin, very thin or lean, बहुत ज्यादा दुबला और कमजोर हो जाता है। Then coming to the second symptom is here they will show exophthalmia। तो ये exophthalmia क्या है, इनके अंदर इनके जो आंख है, ये पूरे आंखों के जो आई बॉल्स है ये बिल्कुल ऐसा बाहर आ जाते, ऐसा महसूस होता है कि झुका तो कहाँ गिर जाते की आंखा। तो इनकी आंखों के जो डल्ले हैं पूरे बाहर नजर आते, तो बाहर निकल के आ जाते, तो ऐसा झुके तो ऐसा दिखता है कि कहाँ गिर जाते कि इनकी आंखा। तो वो अलामत है इसकी बेहतरीन पहचान हाइपरथायरॉयडिज्म की। So in hyperthyroidism people, what is that notice? The eyeballs are protruded out in such a way that as if it is noticed that the eyeballs are going to fall down there. If they bend, the eyeball will fall down. Okay, and what is that condition called? It is called as exophthalmia. Exophthalmia. So we write it here this. The eyeballs are protruded out the eyeballs are protruded out this condition is called exophthalmia. ओके, उसके बाद जो दूसरी दो अलामतें हैं वो उसमें अपने हाइपोथायराइडिज्म में भी नजर आई थी। हाइपोथायराइडिज्म में क्या थी कि पहली चीज इरेगुलर मेनेस्ट्रुअल साइकिल, वो यहाँ पर भी वो अलामत नजर आएगी। ओके, इन फीमेल्स इरेगुलर मेनेस्ट्रुअल साइकिल इज इवन नोटिस्ड इन हाइपरथायराइडिज्म। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इन आवर हाइपोथायराइडिज्म वी हैव सीन the simple goiter. Here also we will notice the simple goiter there. Okay, so we write it here there. Irregular menstrual cycle, and the fourth symptom is the simple goiter. ओके, तो यहाँ पर तो ये सारी अलामतें थी अपने हाइपरथायराइडिज्म की। उसके बाद हम हमारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की जानिब जाएंगे, वो है हमारा पैनक्रियास। कैन यू रब दिस साइड? अब पैनक्रियास के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है। हो गया पूरा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम खत्म। ओके,
So the next thing we are going to see now about the another endocrine gland, that is pancreas. What is the other endocrine gland? Pancreas. So whenever we write any endocrine gland, we will be first writing the location of that endocrine gland. तो जब कभी भी हम यहाँ पे कोई दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिखते हैं तो पहले हमको उसकी लोकेशन, ये हमारे जिस्म में कहाँ पर है, वो हमको लिखना पड़ता है. तो नेक्स्ट थिंग वी आर राइटिंग हियर इज द लोकेशन ऑफ आवर पैनक्रियास. सो इट इज सेड देयर दैट आवर पैनक्रियास आर लोकेटेड बिलो द स्टमक. बिलो द स्टमक, अपने पेट के निचले हिस्से में मौजूद है हमारी पैनक्रियास. Then coming to some information about our pancreas. Okay, that our pancreas is what type of gland? So it is said there, pancreas is a mixed gland. Mixed gland. In the sense, what is the meaning of mixed gland? Okay, it means that half part of the pancreas is serving as a exocrine gland. Okay, and the other half is working like endocrine gland. तो ये बोला गया कि हमारी पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है. ये मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड गदूद है. ग्लैंड का मतलब क्या है? गदूद. तो इसको हम क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोल रहे हैं? इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसका आधा हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और दूसरा आधा हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है. तो हम ये मौजूदा टॉपिक के हिसाब से सिर्फ हम ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इन दिस टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास देयर. ओके, सो व्हाट इज दैट? हियर देयर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट बाय नेम Paul Langerhans there. Paul Langerhans there. So Paul Langerhans, what he has done? He did research. Okay, he did research. Okay, research and found that pancreas, means the endocrine part of pancreas, okay, is made up of islets of Langerhans cells. Islets of Langerhans cells there. So what is the meaning of this islets here? Langerhans is what? So in previous days, whichever scientists used to do research and find any or discover any organ, they used to name it on their name there. So this man's name was what? Paul Langerhans. So he also did the same thing. He attached his name with his discovery as Langerhans cells there. So what is the meaning of the word translation of islets? Means here islands there. Means okay, island there. So what is this islands means here? Means our Paul Langerhans, what he did, he has taken a small piece from this endocrine part of pancreas, and when he observed it using the microscope, he found small patches of cells in that endocrine part of pancreas. जब हमारे पॉल लैंगरहैंस ने क्या किया, ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में से एक छोटा सा टुकड़ा कट करके जब उसको खुर्दबीन में लगा कर देखा तो उसको ऐसा दिखा, छोटे छोटे एक जजीरे. आइलैंड बोले तो क्या है? जजीरे, छोटे छोटे जजीरे. जजीरे का मतलब क्या होता है? अतराफ से पानी और बीच में एक सूखी जमीन का टुकड़ा होता है. तो इस तरीके की चीज दिखी उसको वो टुकड़े के अंदर, जो उन्हें एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में से लेके ओके माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखा. तो इस वजह से उसने क्या किया, उसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लगा दिया. लैंगरहैंस क्या है? उसके नाम के साथ उसको जुड़ा दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पैनक्रियास का आधा हिस्सा है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, अब ये कौन से दो हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये कौन से ऑर्गन्स को ये टारगेट करते हैं. सो नाउ वी विल बी गोइंग टू सी दैट दिस एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास is going to target which organs and what function they are going to do there. Okay, so write it now.
Okay, where it is located? Below the stomach, and here we write the pancreas. The pancreas is a mixed gland because half of it is working like exocrine gland, and other half is working like endocrine gland. Then in the next point we write here, okay, a scientist by name Paul Langerhans has done research and named the cells of pancreas as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. So in that, islets means what here? Islands. Okay. Now, as I have said you, that what are the hormones released by this? Okay, we will be going to see now what are the hormones released by the exocrine part of pancreas there. So this exocrine part of pancreas, the exocrine part of pancreas will release two hormones. How many hormones it is going to release? Two hormones. Okay, what are they? They are insulin hormone and the second one is here glucagon hormone. Okay, so we will be going to write it now, the target organs for these two hormones and what functions they are going to do there. Okay, no problem. The next thing here, as I have said you, we are going to write the first hormone, insulin hormone. Now write the target organ for this insulin. Target organ. Okay, so what is the target organ for this insulin hormone? All of you listen here, ma. The target organ for insulin hormone is glucose in the blood there. So what it is going to do there? It target the glucose and convert the glucose to glycogen. Okay, and this glycogen is taken to liver and muscles and made to store in the liver and muscle. तो ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, ये तब ही रिलीज होगा जब हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है. और वो कब बढ़ता है? जब हम खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. तब फौरी तौर पे हमारा ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है, ये जो हमारा एंडोक्राइन पार्ट है,
ये पहले इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता, जो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था वो ग्लूकोज को टारगेट करता है और ग्लूकोज को तब्दील करता है ग्लाइकोजिन में। कब तक तब्दील करते रहता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में? जब तक हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। जैसे ही हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो गया, ओके, इमीडिएटली फौरी तौर पे ये इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। ओके, तो ये पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, टारगेट ऑर्गन के अंदर कि ये किसको टारगेट कर रहा? ओके, इट टारगेट द ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज इन ब्लड। Then we will write one more line here. Okay, insulin hormone. Objective type bits they may ask you. Objective type bits में पूछने की संभावना है। Insulin hormone is going to, okay, insulin hormone is going to release when the level of glucose in blood rises. Then coming to the function of this insulin hormone. So what it is going to do there? The insulin hormone target the glucose in blood and convert it to glycogen up till what? Up till the level of glucose in blood comes to normal level. Okay, comes to normal level. Then coming to the next thing is here. Okay, this produced glycogen is stored in liver and muscles. Is stored in what ma? Liver and muscles. ये जो ग्लाइकोजिन बनती है वो जाकर हमारे कलीजे में और हमारे जिस्म के सारे मसल्स में जाके महफूज हो जाती है। तो यहाँ पर वो हमारे इंसुलिन हार्मोन की कारकर्दगी। So here we completed what function our insulin hormone is going to do there. Now we will be going to see now what function our glucagon hormone is going to do there. उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी दूसरा हार्मोन है हमारा ग्लूकागॉन, वो क्या काम अंजाम देता है। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट व्हाट फंक्शन आवर नेक्स्ट हार्मोन ग्लूकागॉन गोइंग टू डू देयर। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन क्या काम अंजाम देता है और वो किसको टारगेट करता है। तो पहले मैं ये बताता चलूं कि हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन टारगेट करता है हमारे कलीजे को और हमारे जिस्म के सारे मसल्स को। क्यों कर रहा कलीजे को और मसल्स को? क्योंकि कलीजे में और मसल्स में कौन महफूज है? ग्लाइकोजिन महफूज है। और ग्लाइकोजिन क्या है? वो भी एक किस्म की शुगर ही है। ओके, छोटे साइज की शुगर है। ओके, तो अब यहाँ पे ये ग्लूकागॉन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता वो हम जानेंगे।
जब हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और ये भी कैफियत होती बाज लोगों के अंदर, क्योंकि अक्सर रमजान में जब हम रोजा रहते हैं, सहरी में अगर हम अच्छी तरीके से हम सहरी नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर ये असर के बाद से खून में ग्लूकोज का लेवल कम होते रहता। तो वो टाइम पे अल्लाह ताला हमारे को कैसा बचा रहे, अपनी मदद कैसा करा रहे कि फौरी एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को हुक्म जारी कर रहे कि भाई फौरी आप ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कब तक? तब तक जब तक ये मेरे बंदे के खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल को ना आ जाए। तो वो टाइम पे हमारा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास ये ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करते रहता और खून लेकर जाता ये ग्लूकागॉन हार्मोन को दो टारगेट ऑर्गन्स कलीजा और मसल्स के पास। ओके, और जाके ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता? ओके, ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो ग्लाइकोजिन हमारे कलीजे में और हमारे मसल्स में महफूज है, उस पे अपना असर दिखा के ग्लाइकोजिन को फिर से दोबारा ग्लूकोज बनाना शुरू करता। और वो कब तक बनाते रहता ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में? जब तक कि हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल को नहीं आ जाता। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। So what is that our glucagon hormone going to do there? Okay, so we write here the target there. So what it is going to do? So this glucagon hormone is going to target the, it target the liver and muscles. It target the liver and muscles there. Then what function it is going to do? So we write here the glucagon hormone is going to release when the level of glucose in blood decreases. Then what it is doing there? The glucagon hormone will target the liver and muscles and convert the glycogen stored in it to glucose up till the level of glucose in blood gets normal. Okay, so do we stop here? Okay.